component, that is the ER. Yes, sir. As of now, in the ER, we are done with its discovery. We are done with its origin as well as with its ultrastructure almost. In the ultrastructure, cisternae, tubules, and vesicles we discussed. Then, what we did, we described this plasma membrane as system of membranes. Reason? Its components are scattered in the cytoplasm, and each component, that is cisternae, tubules, and vesicles, are having their own membranes. This is the reason why this ER divides cytoplasm or intracellular matrix into two compartments: extraluminal compartment and luminal compartment. Luminal compartment means the lumen within the membrane of vesicle, cisternae, and tubule. And extraluminal compartment means the cytoplasmic compartment, which is outer to the membranes of these three components. Afterwards, we discuss the types: agranular and granular. Agranular, rough, and granular, smooth. Do you know how to compare and contrast these two types of endoplasmic reticulum? Yes, sir. Fine. Yes. So let us start our today's discussion with some of the important modifications. Let us start our today's discussion with some of the important modifications of ER. ER माने Endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कितने टाइप्स हैं ER के हमारे पास? दो टाइप्स. Two types. कौन कौन सा? RER and SCR. These things you know. This RER, I told you, will be seen in those cells which are actively involved in Protein synthesis. protein synthesis and secretion. In this context, I will mention here, number one, Nizzel's granules. Nizzel's granules are specialized RER granules which are found in the nerve cells. They are found where? In the nerve cells. These Nizzel's granules, these RER in the nerve cells, are responsible for the synthesis of neurotransmitters. सुना होगा नाम आप? Neurotransmitters. Yes, sir. So when it comes to the synthesis of neurotransmitters in the nervous system, which type of ER we are going to use? RER. RER. Similarly, in case of our blood system, we have one more type of RER we call as Rossell's granules. Rossell's granules are modifications of SCR or RER. RER. These Rossell granules are found in our plasma, that is blood, for the synthesis of various antibodies. So in our plasma, when it comes to the synthesis of antibodies, we use RER. Those special RER we call as Rossell granule. बात समझ में आई आपको? Yes, sir. Similarly, we have some specialized SCR
associated with special cells. सबसे पहले ये बताइए SCR is found in those cells which are actually involved in lipid glycogen metabolism, synthesis. Lipid synthesis. glycogen metabolism, and Steroid hormone. Steroid Hormone meta. hormone. in this context you can quote sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum is the SCR version which is found in muscle and cardiac cells. मसल सेल्स और कार्डियक सेल्स में हमें SCR का कौन सा वर्जन दिखेगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. किस चीज के लिए? फॉर द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम. फॉर द स्टोरेज ऑफ व्हाट? Calcium. This calcium is later on used for ATP production. Calcium is later on used for what? ATP production. So that what happens? Muscle contraction. So what is the job of the sarcoplasmic reticulum in our muscle cells and cardiac cells? Muscle contraction. By storing calcium and using that calcium later on for ATP synthesis. One more version of SCR we have available with us. We call them as myeloid bodies. We call them as what? Myeloid bodies. Myeloid bodies are found in the retinal cells. You know retinal cells? Yes, sir. No, sir. The cells of our retina, eye retina. Here, these myeloid bodies are required for the synthesis of various pigments. Like, you people might have heard the name rhodopsin, iodopsin. The various pigments in our retinal cells, like rhodopsin, like iodopsin, are synthesized at the cost of SCR. Which SCR? We call that SCR as myeloid body. So each type of ER, RER, and SCR has its modifications. RER modifications, Nissl granules, Rosell granules. SCR modifications, sarcoplasmic reticulum, myeloid bodies. In your competition, you can be asked, which of the following is RER, which of the following is SCR? तो RER में याद रखेंगे Nissl granules, Rosell granules. और SCR में याद रखेंगे क्या? Sarcoplasmic reticulum and myeloid bodies. Plus their function you will also remember. Is that clear? Yes. With respect to this endoplasmic reticulum, you people should also have information regarding microsomes. Microsomes are small ER fragments. Small ER fragments which we get when a cell is subjected to centrifugation. सर ये RER का मॉडिफिकेशन है. आपने बिल्कुल आपने सेंट्रीफ्यूज देखे होंगे हॉस्पिटल में कि नहीं? Yes, sir. When a cell, suppose, when this cell is subjected to what? Centrifugation.
So what you will see in the cytoplasm of this cell, we are going to come across छोटा छोटा fragments of ER. These छोटा छोटा fragments of ER have ribosomes associated with them. These छोटा छोटा fragments of ER which we get upon the centrifugation of a cell, they are called as microsomes. Microsomes को पहचानने का तरीका, these small fragments of ER have ribosomes associated with them. इसीलिए cell biologists say microsomes could be the modified RER. They could be the modified RER. Please write down NOTE note. Microsomes do not exist in living cells as such. माने यूजुअली जब आप एक सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, क्या आपको माइक्रोजूम्स दिखाई देंगे? No, sir. That means microsomes do not exist in living cells as such. Microsomes को विजुअलाइज करने का, ऑब्जर्व करने का एक ही तरीका है, the cell should be subjected to centrifugation. Centrifugation. इसीलिए अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे, सर what are the functions of what? Microsomes. Microsome. So I will answer what? बताइए मैं क्या जवाब दूंगा? Unknown. Why I will say the function of microsomes is unknown? Because they have not been seen in the living cells as such. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. आगे आगे सर आगे कहां? The functions of ER. Number one, ER is part and parcel of cell endoskeleton. ER is part and parcel of what? Cell endoskeleton. सर क्या मतलब ER is part and parcel of cell endoskeleton? बिल्कुल सुना होगा आप लोगों ने. In the cytoplasm of a eukaryotic cell, we have microtubules. We have microfilaments. These microtubules and microfilaments provide skeletal support to cell cytoplasm. Microtubules and microfilaments we will be discussing later on, as they provide skeletal support or mechanical support to cell cytoplasm. Sir, but we also know one more thing. What? Sir, we also know one more thing. The components of ER are also scattered in the cytoplasm. Yes or Yes, no? sir. Elements of ER
are also scattered in the cytoplasm. So, along with these microtubules and microfilaments, ER forms a part of endoskeleton. Mane, endoplasmic reticulum, along with microtubules and microfilaments, provides skeletal support or mechanical support to the cell cytoplasm. Is that clear? Yes, sir. Number two, this endoplasmic reticulum helps in increasing the rate of cell metabolism. With the help of ER, you can shoot up, you can increase what? The metabolic rate of the cell. कोई बता सकता है कैसे? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा. हाँ, very good. Thank you very much. Sir, we know that ER elements are membrane bound. Yes, sir. ER elements are membrane bound. They are scattered throughout the cytoplasm. So these membrane bound structures will increase the surface area of cytoplasm. जितना आप सेल के साइटोप्लाज्म का सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे उतना रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होगा? हाई. So do you now agree that ER can be used in increasing the cell metabolism? Rate of cellular activities increases? Okay. Why? Because ER elements are membrane bound. They are scattered throughout the cytoplasm. They will be increasing its surface area. Third, ER is involved in the synthesis of proteins. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन सा ER? आर्या. कैसे? Presence of Because it's ribosomes. ribosomes. Towards its outer surface. ER is also involved in the synthesis of lipids, in the synthesis of sex hormones. कौन सा ER? SER. SCR. Do you remember? I had told you that SER is found usually in those cells which are involved in steroid hormone synthesis. Yes, sir. Yes, sir. Steroid hormone synthesis, I mean to say sex hormone. Sex hormone, I mean to say males में Testosterone. testosterone, very good. और females में Estrogen. Progesterone. estrogen. कि नहीं? Yes, sir. So sex hormones in male, testosterone. Sex hormones in female, progesterone. They are estrogen. They are synthesized by which type of endoplasmic reticulum? SE. SER. SCR. Clear? Okay. Besides this, ER is also involved in the detoxification of TPS from the cells. बात समझ रहे हैं? Endoplasmic Yes, reticulum sir. is also involved in the detoxification of DPS. DPS from the cells. D is drugs. P is pollutants. And S is steroids. Both steroids, pollutants, as well as drugs, they are harmful for the cell functioning.
Yes, sir. मैं इसको थोड़ा इजी करता हूं आपके लिए. Example, we have aspirin, we have benzopyrene, etc. Aspirin, benzopyrene, these are the harmful drugs. These are what, Gubur? Harmful drugs. Harmful drugs. What we need to do? We need neutralization of these harmful drugs from the cell cytoplasm. For that neutralization of harmful drugs like aspirin and benzopyrene, we will use smooth endoplasmic reticulum. We will use what? Smooth Reticulum. Smooth endoplasmic reticulum में याद रखेंगे. We have a total of 11 enzymes. How many enzymes? 11. Of those 11, 9 are found in the cytoplasm. How many are found in the cytoplasm? And 2 are 9. found in the mitochondria. 2 are found where? Mitochondria. अगर आपको साइटोप्लाज्म से ड्रग्स को, पोल्यूटेंट्स को, स्टीरॉइड्स को न्यूट्रलाइज करना है, तो इन 9 ER एंजाइम्स को आप उस पर्टिकुलर पोल्यूटेंट, ड्रग या स्टीरॉइड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे. यस और नो? Yes, sir. सिमिलरली Yes, अगर sir. आपको माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को न्यूट्रलाइज करना है, यू विल यूज द 2 एंजाइम्स ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. यस और नो? Yes, sir. Yes. Of those total 11 enzymes, the most famous is cytochrome P450. उन 11 एंजाइम्स में से सबसे जो इफेक्टिव एंजाइम यूजुअली ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में यूज होता है, इट इज Cytochrome P. माने वो वाला एंजाइम which absorbs light of which wavelength? 450 नैनोमीटर. बात समझ रहे हैं आप? Yes, sir. एक ऐसा एंजाइम एसोसिएट होगा SER के साथ जो एक्टिवेट होता है, जो एब्जॉर्ब करता है किस वाली लाइट को, जिसकी वेवलेंथ कितनी होती? 450 nanometer. This cytochrome P450 is the most famous enzyme which is involved in drug detoxification. Is that clear? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, Excuse. आपने वहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखा है? Aspirin, ASPIRIN. यहाँ पे सर दूसरी एग्जाम्पल. benzopyrene, sorry, it's benzopyrene. आपको मुझे वहीं पे पूछना था. It's benzopyrene. Writing error. थैंक यू सर. It's benzopyrene. ठीक. One more function. ये जो SER है, SER. Smooth endoplasmic reticulum. It is responsible for the formation of Golgi apparatus or Golgi bodies. Golgi bodies
our next part of endomembrane system to be discussed. It arises from which version of endoplasmic reticulum? Smooth. SCR. Next important function. This ER also helps in the formation of nuclear membrane during cell division. During cell division. आपने सेल डिवीजन का नाम तो सुना ही होगा. हाँ सर, सुना है ना. Yes, sir. Yes. सेल डिवीजन में आपने सुना ही होगा एक फेज आता है टीलोफेज. Yes, sir. और टीलोफेज में आपने बिल्कुल सुना होगा क्रोमोसोम्स के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स. Yes, sir. ये जो टीलोफेज के दौरान दो डॉटर न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहिए. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे बनता है? ये बनता है Endoplasmic reticulum. ER elements or fragmented vesicles of old nuclear membrane. Old nuclear membrane. When I say ER helps in the formation of nuclear membrane during cell division, तो टीलोफेज में आप देखेंगे जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होता है, वो नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे? एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूज करेंगे, प्लस जो पुराना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा जो डिसअपियर हुआ होगा प्रोफेज में, उसके फ्रेगमेंटेड वेसिकल्स को हम जोड़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स से और क्या बनाएंगे? नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बात समझ आई आपको? Yes, sir. Sir. Yes, sir. A quick recap. When we talk about the functions of ER, number one, it forms part and parcel of endoskeleton along with microtubules and microfilaments. Mane, it is involved in giving skeletal support to the cell. It is used for enhancing the rate of cellular metabolism. Because of its scattered nature in the cytoplasm, it increases its surface area. RER, synthesis of proteins. SER, lipids, plus sex hormones. Endoplasmic reticulum helps in drug detoxification, pollutant detoxification, steroid detoxification from the cells. Principal drugs that are neutralized include aspirin and benzopyrene at the cost of most famous enzyme, cytochrome P450. What 450 represents or demarcates here? The light of a particular wavelength which is being absorbed. Besides, SCR is also going to help in the formation of Golgi bodies, plus it also helps in the formation of nuclear membrane during cell division. Sir, from the functions of ER, the chances of a question are in which pattern? एक तो पहला pattern है statement based. Which of the following is correct about functions of ER? Which of the following is incorrect regarding functions of ER? दूसरा, which enzyme of ER is used in drug detoxification? जवाब Cytochrome. Cytochrome P4. cyto. Third, which version of ER is used for the synthesis of testosterone and estrogen? SCR. SCR. तो ये दो पॉसिबिलिटीज बनते हैं क्वेश्चन के अगर ER के
फंक्शन से पूछा जाएगा। तो अगर मैं इस ईआर को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, आपके लिए समराइज कर दूं, तो सबसे पहले यू पीपल डिस्कस्ड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ ईआर, कि नहीं? डिस्कवरी में आपने बात की किसकी? गार्नियर की। उसके बाद थॉमसन एंड पोर्टर, आफ्टर दैट we discussed about its origin, जहां पे आपने दिखाया how the outer nuclear membrane evaginates and forms this ER. Yes or no? Yes, sir. Yes. उसके बाद आपने ER के टाइप्स देखे by comparing granular with what? Agranular. जहां पे आपने देखा ग्रेन्यूलर राइबोसोम, एग्रेन्यूलर विदाउट राइबोसोम। ग्रेन्यूलर में जो राइबोसोम्स होंगे वो आउटर सरफेस पे होंगे या इनर सरफेस पे होंगे, जरा बताइए। Outer surface. Outer. जो आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स होंगे, दे विल यूज देयर 40s सब यूनिट टू बाइंड विद द सरफेस। 60. थैंक यू। No, sir, 60s 60s. यूजिंग शाबाश। Riboforin Riboforin first, riboforin second. विच आर स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। Glycoproteins. उसके बाद आपने ग्रेन्युलर में सेल के एग्जांपल्स दिए और एग्रेन्युलर में सेल के एग्जांपल्स दिए। Yes, ठीक। sir. और आज के सेगमेंट में आपने टाइप्स में अलग अलग डिस्कस किए। ईआर के क्या? Modification. एसईआर के 2 और आरईआर के 3। यस और नो? Yes, sir. एसईआर के 2 कौन से? एसईआर के 2 कौन से? Sarcoplasmic reticulum, myeloid bodies, और आरईआर के कौन से? measles granules, And finally you wrapped up this ER at its Function. functions. तो अगर आप लोगों का मूड आगे बनेगा कभी किसी भी सब्जेक्ट में शॉर्ट नोट्स बनाने की, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो जाए, तो आप ऐसे ट्राई मार सकते हैं। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. आगे चलें, इफ यू परमिट। Yes, sir. ओके, आगे कहा? Golgi body. Golgi body, Golgi apparatus. The screen is visible to all. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. Golgi apparatus के बारे में मैं पहले से आपका माइंड सेट करके रखता हूं। We will discuss about its discovery. We will discuss about its ultrastructure. And like ER, we will explore its functions. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो नीट पैटर्न है, जो एनटीए की डिमांड है, as per the textbook, that is about its discovery, ultrastructure and functions. और ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं, हो सकता है सम आइटम में कंसल्ट सम बुक, वहां पे गोल्जी अपैरेट्स के एंजाइमोलॉजी के बारे में लिखा होगा, गोल्जी अपैरेट्स की जेनेटिक्स के बारे में लिखा होगा, गोल्जी अपैरेट्स के इवोल्यूशन के बारे में लिखा होगा।
गोल्जी एपरेट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे लिखी होंगी चीजें, तो वो सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। समझ गए मेरी बात? Yes, sir. Yes. Yes, sir. पूरा फोकस इन 3 Yes, पार्ट्स sir. पे करना। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी of these Golgi apparatus goes to an Italian doctor, MBBS doctor, जो आप लोग बनना चाह रहे हैं, Camilo Golgi. कैमिलो गोल्जी या गोल्गी, जो भी आपको करना है। 1898 डेट इंपॉर्टेंट, मेंशन्ड ऑन द टेक्स्ट बुक। Actually, this Italian doctor Camillo Golgi, he was experimenting with the oval and cat cells. Camillo Golgi was studying oval and cat cells. What was he actually studying? The nerve cells. कौन से oval और cat cells? Camillo Golgi was studying nerve cells. For the study of these oval and cat nerve cells, Camillo Golgi used a special staining technique that is famous as silver staining technique. सर, ये सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक क्या है? सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक का प्रोसीजर समझाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको एक वर्ड में पूरी कहानी बताता हूं। एक्चुअली कैमिलो गोल्जी यूज्ड silver salts. He used what? Silver salts to study the cytoplasm of oval and cat cells. So let me show it here. Let us suppose this is a nerve cell of oval or cat. Camillo Golgi stained this oval or cat nerve cell with which salts? Shabash? Silver salt. Silver salt. Silver salt. Salt. And what he found here? न्यूक्लियस तो पहले से ही डिस्कवर हो चुका है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. While staining the cytoplasm of oval and cat cells using silver salts, Camillo Golgi came across some dense reticular structures near the nucleus. Near what? Nucleus of the cell. Reticular structures माने Network-like structures. net-like structures. Very good. Some net-like structures, some dense reticular structures were found near the nucleus of oval and cat cell cytoplasm. For these dense reticular structures, this Italian doctor, that is Camillo Golgi, used the term IRA. He used the term what? IRA.
IRA माने इंट्रा रेटिकुलर apparatus. इंट्रा माने what? Inside. Within cell. कि नहीं? Yes, sir. Reticular माने net like. And apparatus माने structures. बात समझ रहे हैं आप मेरी? Yes, sir. Yes. So as per chemology, there are some net-like structures within the cytoplasm of cat and oval cells. So he called those net-like structures near the nucleus as intra-reticular apparatus. These intra-reticular apparatus were later on called as Golgi apparatus. They were later on called as what? Golgi apparatus. By the famous film actress Kajal. 1914 में Kajal used the term Golgi apparatus for these intra-reticular structures as a mark of respect for the discovery. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. तो डिस्कवरी में अभी तक आपको क्या समझ में आया? The credit for the discovery goes to Camilo Golgi. He was exploring the cytoplasm of oval and cat cells, especially nerve cells, using silver staining technique. He stained oval and cat cell cytoplasm with silver salts, found some dense reticular net-like structures near the nucleus. For them, he used the term IRA, intrareticular structures, mane net-like structures or apparatus within the cytoplasm. As a mark of respect for the discoverer, Kajal in 1914 used the term Golgi Golgi. apparatus. Since their discovery, I mean to say, since the discovery of Golgi apparatus, many synonymous terminologies have been given to these Golgi apparatus. Golgi apparatus को कुछ और भी synonymous names दिए गए. Those synonymous names are asked in the examination sometimes. Like these Golgi apparatus are famous as. They are famous as Golgi complex. किन्होंने Golgi complex कहा? बेकर्स ने. इसलिए इनको बेकर्स बॉडी भी कहा जाता है. बेकर्स बॉडी. Let me make it more simple. As per Bakers, जो Golgi apparatus के क्या है? Components. They are present in the form of a complex. That complex was given the name Golgi complex. इसको थोड़ा और इजी करते हैं. You know the components of ER? Yes, sir. Yes, sir. Yes, जरा sir. नाम ले लीजिए उन components का. Cisternate, tubules, vesicles. The same three components are found in Golgi apparatus as well. But, sir, we know the cisternae, tubules, and vesicles of ER are not localized. They are scattered. Yes or no?
Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes. Unlike that, the cisternae, tubules, and vesicles of Golgi complex are interconnected. They are localized and hence form a complex. Form a what? Complex. ये पहले कहा था बेकर्स ने, इसीलिए Complex. गोल्जी कम्प्लेक्स को बेकर्स बॉडी भी कहा जाता है. ठीक है गुबर? Yes, sir. Yes, sir. These Golgi apparatus are also famous as lipidochondrion. Why? Because they are rich in lipids. Golgi apparatus are rich in lipids. Hence, they have also earned the name of lipidochondrion. Golgi apparatus are also famous as Dalton's complex. They are also famous as what? Reason? Dalton first observed Golgi apparatus in electron microscope. Golgi apparatus were first studied by Dalton under electron microscope. So they are also known as Dalton's complex. Is that okay? Yes, sir. These Golgi apparatus are also famous as dictyozooms. Dictyozooms represent the Cell Golgi apparatus of plants. The term dictyozoom is used with respect to the Golgi apparatus of plants. Golgi apparatus are also famous as traffic police of the cell. Reason? All types of secretions are processed in Golgi apparatus. सेल में जितने टाइप के भी सिक्रीशंस बनेंगे उन सिक्रीशंस को अपने रेस्पेक्टिव टारगेट साइट्स पे डिलीवर करने से पहले प्रोसेस करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है whether they have been synthesized correctly or not. और वो चेक का काम कौन करता? Golgi apparatus. That is why they are also famous as शाबाश traffic police of traffic cell. police. So, They are also famous as post office of the cell. Golgi apparatus are also famous as what? Post office of the cell. Reason same. All cellular secretions before being delivered to their respective targets are processed here in the Golgi apparatus. That is why you can also label them as post office of the cell. Golgi apparatus are also famous as export house of the cell. Golgi apparatus are also famous as what? Export house of the cell. कोई बताएगा क्यों? थोड़ा बहुत आइडिया? सर इसी से होता है ना, मतलब प्रोसेस होके इसी से निकलते हैं फिर वो सिक्रीशन वगैरह. इसका मतलब ये है कि सेल सिक्रीशंस are delivered out of the cell with the help of Golgi apparatus. बात समझ में आई आपको? Yes, sir. Golgi apparatus are also famous as
Middleman of the cell. What is the job of middleman? ये दो पार्टीज के बीच में डील कराता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो जितने भी टाइप्स के सेल्यूलर सिक्रीशंस होंगे उनको पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेलीज से रेस्पेक्टिव टारगेट साइट्स पे डिलीवर करने का काम कौन करेगा? गोल्जी अपैरेट। इसीलिए इसको मिडलमैन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So these were some famous terminologies which are associated with Golgi apparatus. I hope you people now know as why Golgi apparatus are called Golgi complex, why they are called lipidochondrion, why they are called Dalton's complex, why they are called dictyosomes, traffic police of the cell, post types of the cell, export house of the cell, middleman of the cell. Clear? Yes, sir. सर मिडलमैन ऑफ सेल को फिर से रिपीट कीजिए। मिडलमैन ऑफ सेल को फिर से रिपीट कीजिए। बिल्कुल करेंगे। आपको कहीं पे सपोज दिख रहा है? ऊपर 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 सेल दिख रही है कहीं पे ग्रीन कलर की? यस सर। इस सेल में आपको रेड कलर की कुछ लाइंस दिख रही हैं? यस सर। दिस इज गोल्जी बॉडी। दिस इज व्हाट? गोल्जी बॉडीज। इस सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होंगे, उनको आप मानिए एक पार्टी। ठीक है? यस सर। उन पार्टीज को अपने अपने सिक्रीशंस साइटोप्लाज्म के दूसरे एरियाज में ट्रांसपोर्ट करने हैं। उसके लिए दे विल आस्क हेल्प फ्रॉम गोल्जी अपैरेट्स। तो गोल्जी अपैरेट एक पार्टी से माने सेल ऑर्गेनेलीज से वो सिक्रीशंस साइटोप्लाज्म के दूसरे एरियाज में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। तो मिडलमैन हुआ कि नहीं? यस सर। ओके। नाउ with respect to these Golgi apparatus, you need to have information regarding an important term. Golgian ground or zone of exclusion. Golgian ground or zone of what? Exclusion. To make its understanding more easy for you people, again, we will suppose this is a cell over here. CELL. In this cell, cytoplasm as usual. In this cell, nucleus as usual. और बिल्कुल न्यूक्लियस के नजदीक क्या? गोल्जी अपैरेट्स। Golgi apparatus. In this cell, other cell organelles. Yes or no? Yes, sir. Mitochondria, endoplasmic reticulum, plastids अगर plant cell है तो these are cell organelles. From this supposition, can you see that the area of cytoplasm where Golgi apparatus are present, we have no other cell organelle over there? इस सपोजिशन से आप लोगों को क्या लग रहा होगा? सर ये लग रहा है जहां पे साइटोप्लाज्म में गोल्जी बॉडी है, उस गोल्जी बॉडी के अराउंड कोई और सेल ऑर्गेनेली नहीं दिखाई दे रहा। Yes, sir. तो दिस एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म, this area of cytoplasm which is surrounding shabash Golgi body
and has no other cell organelle. इसी को हम क्या कहते हैं? जोन ऑफ एक्सक्लूजन या गोल्जियन ग्राउंड. तो जरा मुझे बताइए, व्हाट इज गोल्जियन ग्राउंड, व्हाट इज जोन ऑफ एक्सक्लूजन? Sir, it is a clear cytoplasmic area around Golgi bodies where no other cell organelle is present. और गुबरो का अच्छा समझ वहां सारनी के ना. Yes, sir. If you have any confusion regarding the discovery of Golgi apparatus, if you have any confusion regarding the terminologies, if you have any confusion regarding the zone of exclusion, you can ask very frankly. Or shall I move ahead? जी. सर जो आपने इससे पहले डायग्राम बनाई थी ना, आप वो रिपीट कर सकते हो? मुझे डिस्कनेक्ट हो गया था. ये वाली? पहले सर, नो सर, इससे पहले ये सर, यस सर, यही वाली. इस वाली डायग्राम में मैंने सिर्फ बताया था कि ये गोल्जी अपैरेटस को डिस्कवर कैसे किया गया. तो ये हमने सपोज की थी यहाँ पे ये कैट या ओवल सेल है, नर्व सेल. इसके साइटोप्लाज्म को स्टेन किया कैमिलो गोल्जी ने विद सिल्वर सॉल्ट्स. और क्या देखा, इस सेल के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल वी हैव अ नेट लाइक स्ट्रक्चर. That net-like structure near the nucleus was called by Camillo Golgi as IRA, that is intra-reticular structures, माने net-like structures which are present within the cell. Later on, these intra-reticular structures were called as Golgi apparatus by Kajal. So अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, the term Golgi apparatus was given by answer Kajal. Clear? Female gamete is clear? Yeah. Yes sir. Okay. और कुछ या मैं आगे चलूं जो आप कहेंगे? अरे सर हम क्या कह सकते हैं? चलिए, आपकी साइलेंस को मैं मानता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि सर आगे चलिए, ठीक है ना? Yes, sir. The ultrastructure. Ultrastructure of Golgi complex or Golgi bodies. Like ER, these Golgi bodies have three structural components. How many structural components? Three. One cisternae, second tubules, Screen and third vesicle. Yes sir, freeze हो गया शायद. screen. Yes, sir. Yes, अच्छा. sir. स्क्रीन नहीं दिख रही. Screen, please. डिले है बहुत ज्यादा. Yes, The sir. freeze over. Yes. Yes, sir. 1 minute, 1 minute. Wait. Yes, sir. Number 1, am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Number 2, the screen is now visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्या लिखा sir. है स्क्रीन पे? Cysternate Ultrastructure. Ultrastructure. Three structural components. नहीं, कुछ आइटम उसको शायद स्क्रीन लैग हो रही है. Is that so? अब नहीं हो रही है, उतना अब हो रही. तो सर अब ठीक है. Yes, sir. पहले हो रही थी. अभी ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. These three structural components, that is the cisternae, tubules, and vesicles, unlike ER, are interconnected.
That is why they form Golgi complex. complex. Mane, these three structural components of ER are interconnected. They are in the form of a complex, hence the name Golgi complex. Let me first show you the orientation of these three components. Then we will move ahead with the further discussion. सबसे पहले सिस्टरने को दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बना रहा हूं, आप लोग भी वैसे ही बनाएंगे। जैसे मैं बना रहा हूं, यू ऑल्सो ट्राई टू मेक द थिंग्स लाइक। करेंगे ना कोशिश वैसे ही बनाने की? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। ये हम अभी सिस्टर ने बना रहे हैं। राइट नाउ वी आर ड्राइंग सिस्टर ने। क्योंकि अगर आपको ड्राइंग समझ में आ गई तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर विल बी पीनट्स फॉर यू। Try to make the things with me so that you people face no issue during the explanation part. These are sister. These are what? अरे बताओ यार। सिस्टर Sister ने. Sister. अभी मैं इनको लेबल नहीं कर रहा हूं, पहले मुझे तीनों चीजें बनानी दीजिए, बाद में मैं एक साथ इकट्ठा इनको लेबल करूं। नाउ जैसे मैं दिखा रहा हूं, आप लोग भी वैसे ही दिखाएंगे। The red color structures, irregular structures are tubules. The red color structures, irregular structures, these are what? Tubules. लेकिन अभी we are not done. अभी रुकिएगा थोड़ी देर की। थोड़ी देर के लिए रुकेंगे अभी। मैं कुछ और बना रहा हूं ट्यूब्यूल्स पे। Yes, sir. हाँ सर, बना रहे हैं। आप लोग भी बनाइए। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? You also draw. These red color golas as I am drawing. अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कुछ रेड कलर गोलास को मैं पर्पल कलर से शेड कर रहा हूं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोग भी ऐसे ही करेंगे। You will also do the same. सॉरी, इसको नहीं करना है, इस वाले को नहीं करना है, वरना रायता फैल जाएगा। ऐसे करिए, ठीक है ना? दिखाया आपने? Yes, sir. Yes, sir. ना,
कुछ ऐसा दिखाएंगे। लाइक दिस, बिल्कुल आराम से दिखाना है, नो नीड टू हरी अप। और उसके बाद फाइनली कुछ ग्रीन कलर के गोले दिख रहे होंगे आपको, Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल गोल्जी कॉम्प्लेक्स से अलग थलग दिख रहे होंगे ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टाइम फॉर लेबलिंग। सिस्टर ने ट्यूब्यूल्स, आपको लेबलिंग दिख रही है साफ साफ। Yes, Yes, sir. sir. Yes. सिस्टर ने ट्यूब्यूल्स, मैं किस चीज को कहां पे लेबल कर रहा हूं उससे उसका ख्याल रखिएगा। सिस्टर ने ट्यूब्यूल्स, कोटेड वेसिकल्स, and there are also vesicles with purple color filled. Yes, sir. Smooth vesicles, सिस्टरने के बिल्कुल टॉप पे आपको कुछ बड़े बड़े वेसिकल्स दिख रहे होंगे येलो कलर के। Yes, sir. Yes, sir. इनको आप लेबल करेंगे एज गोल्जियन वेसिकल्स या गोल्जियन वैक्यूल्स। इनको क्या करना है एज लेबल? Golden vesicles. और बिल्कुल नीचे अलग थलग आप लोगों को कुछ ग्रीन कलर के वेसिकल्स दिख रहे होंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इनको आप लेबल करेंगे एज ER वेसिकल्स। जिसको ड्राइंग की लेबलिंग समझ में आ गई, ड्राइंग समझ में आ गई, उसके लिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर इज जस्ट पीनट्स। आपकी ड्राइंग हो जाए तो मुझे बताइए। When you are done with drawing, let me know. Done. Done. Okay. Yes, Other sir. items also done. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. कुछ और भी है ना items? If you are done, then I shall move ahead. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. बढ़िए sir. Yes, sir. चलिए sir. Sister ने लिखिए sir. Sister ने. Number 1. These are flat, disc-shaped structures.
which are staked. Cistern are what? Flat, disc-shaped structures which are staked. In the drawing, can you identify cistern? Yes, sir. Yes, sir. माने cistern are placed over one above the other. कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. That is why we call them as staked structures. Number 2, their average diameter. Whose average diameter? Cistern. Sister. Cisternae का. 0.5 to 1 micrometers. Important fact asked in the examination. सर क्यों asked in the examination? मैंने आपको ER के सिस्टरने का डायमीटर बताया? No, sir. नहीं, No, sir. क्योंकि ER के सिस्टरने का डायमीटर टेक्स्ट बुक पे मेंशन नहीं है। गोल्जी apparatus के सिस्टरने का डायमीटर टेक्स्ट बुक पे मेंशन है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक बात? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Let's talk about their number. Number is usually 5 to 8 per Golgi body. Number is usually what? 5 to 8 per Golgi body. माने एक Golgi body में कितने सिस्टर ने at a time stake हो सकते हैं? 5 to 8. 5 to 8. इसका मतलब क्या है? When I say 5 to 8, सर इसका मतलब ये है we have varied number of sister ने, Variations. कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. In Golgi bodies. And this statement will be asked in the examination. Varied number of cisternae are found in the Golgi apparatus. This statement will be asked in the examination. Are you getting? Yes, sir. Yes, sir. Here, you people will write down NOTE note. Here, you people will write down NOTE note. In the dictyosomes of fungi, one cisterna is found. जो गोल्जी apparatus आप देखेंगे किन में? फंगई में। उनके गोल्जी apparatus में कितने सिस्टरने होते हैं? एक। That is why dictyosomes, sorry, that is why the dictyosomes of fungi are called as uni cistern. Is that clear? Yes, sir. Dictyosomes of fungi are unicisternal. Reason? One There. cistern isn't. One cistern. Plus, in this note part, you will write down one more statement. The shape, the size, the number of cistern or Golgi body is here. Depends upon, yeah, depends upon mat likhiye. The shape, size, number of Golgi bodies is directly proportional to the physiological state of a cell.
Yet another important fact from competition point of view. Size, shape, number of Golgi bodies will depend upon what? Physiological state of cell. Physiological state. A quick recap. What we know regarding cistern up to now, these are flat, disc-shaped structures which are staked. Their average diameter is 0.5 to 1 micrometer. Number is usually 5 to 8 in eukaryotic cells per Golgi body. But the number may show variation. Like in the dictyosomes of fungi, we have only one cistern. Hence, their dictyosomes or Golgi apparatus are called as unicisternal Golgi apparatus. Plus, what you remembered, the shape, size, number of Golgi bodies will be depending upon the physiological state of a cell. Excuse me, Is sir. that clear? Yes, sir. सर ऊपर जी 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 बताइए गुबर सर आपने वहाँ पे नोट में क्या लिखा है? कहाँ पे एक मिनट नोट में लिखा है डिक्टियोजूम दिख रहा है आपको DICTYOSOME ये सर उसके बाद लाइक ऊपर डिक्यूजोम ऑफ फंगाई डिक्टियोजूम ऑफ फंगाई सही ओ है डिक्टियोजूम ऑफ फंगाई सर उसके बाद आरो करके आई मीन एरो करके लिखा है 1101 क्रॉस सिस्टर इसका मतलब है वन सिस्टर ने आर प्रेजेंट यस सर थैंक यू सर. ओके और कहीं पे तो आपको कंफ्यूजन नहीं है नो सर. ऊपर 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 चलते हैं सर कहाँ से हमने शुरुआत की थी आज अब आपके बोलने का टाइम आ गया Functions of ER. Modifications. तो कितने मॉडिफिकेशंस देखे RER के 2. 3. जरा पढ़िए नाम लीजिए This is This is granules or you know for what Nozzles. you know for what Yes, sir. SER कितने टाइप्स में आपने इसको मॉडिफाई किया सार्कोप्लाज्मिक में और माइलॉइड बॉडीज में यू नो फॉर व्हाट सार्कोप्लाज्मिक एंड फॉर व्हाट माइलॉइड बॉडीज Yes, sir. Yes, you sir. know why I said the function of microsomes is unknown Yes, sir. Yes, sir, because it's not found in Yes, living dead. cells. ER is part of endoskeleton you agree Yes, sir. Yes, sir. it is going to increase the rate of cellular metabolism you agree Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. it is going to be associated with synthesis of protein synthesis of lipids and sex hormone Yes, sir. Yes. ER is involved in drug detoxification Yes, sir. Yes, sir. the most important enzyme associated with ER is Cytochrome P450. Cytochrome P450. SER will be involved in the formation of Golgi bodies. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Plus one more function. It will help in the formation of nuclear membrane during cell division. Yes, sir. Telophase. Telophase में nuclear membrane reappear होता है. Fragmented vesicles of old nuclear membrane and Yeah. ER elements are going to do the job. Excuse Golgi me, sir. apparatus के बारे में अभी तक we are done with the discovery. We are in the ultrastructure part. Yes, sir. Which technique used by Italian doctor? Syllabus technique. What he found near the nucleus? Dense reticular Dense structure. reticular The name for structures. those dense reticular structures? IRA. IR. Intra-reticular apparatus. IRA replaced with Golgi apparatus by Kajal in 19. Kajal. Golgi apparatus, many synonymous terms you know. Why Yes. lipidocortical, why Yes, sir. Dalton complex, why etc. Yes, sir. Yes, sir. Most importantly, do you know what is Golgian ground or Zuger exclusion? Yes, Yes, sir. Of Yes. cytoplasm surrounding Golgi apparatus जहाँ पे organelles नहीं होती है. यहाँ पे रुकेंगे एक मिनट के लिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया zone of exclusion is associated with ER or Golgi apparatus. Golgi apparatus. Three structural Golgi. components in the form of a complex cistern tubules vesicles. Yes, sir. We are in the cistern part of the Golgi apparatus, and as of now, what is important here? Their diameter. What is important here? Their number. What is important? Unicisternal Golgi apparatus of fungi.
and shape, size, number of Golgi bodies in general, you will remember it depends upon Physiological state of a cell. Physiological state of a cell. simple, straight, and hence proved. Yes, sir. Excitement is Yes. excitement is like the offline. Yes, sir. Almost वैसी ही होगी. सर ये फिजियोलॉजिकल स्टेट थोड़ा डिफाइन करें. नहीं मैं थोड़ा क्यों करूंगा इसको डिफाइन, मैं पूरा इसको एक्सप्लेन करूंगा. कब करोगे? जब मैं गोल्जी अपैरेटस के फंक्शन समझाऊंगा. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. थोड़ा डिफाइन वाला मेल के मीट यस सर. पूरा डिफाइन. ठीक है गुबर? ओके सर. Any other question, confusion or doubt regarding this discussion? No, Sir, sir. what endos? जी गुबर बताइए. Sir, what is endoskeleton and cytoskeleton? एक की बात, एक ही Both. बात. साइटोस्केलेटन का ये एंडोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन माने स्केलेटन ऑफ साइटोप्लाज्म. एंडोस्केलेटन माने स्केलेटन which is present in the cytoplasm. Yes or no? Yes, sir. Okay. और कुछ? यस तो? सर, एक्सक्यूज मी Choose. सर. आपने बताया ना कि टी फेज के टाइम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर होती है, लाइक मेम्ब्रेन से वहाँ दोनों मेम्ब्रेन्स हम बोलते हैं. हाँ होते हैं. तो सर मतलब मुझे यही पूछना है कि इन आउटर दोनों या कोई एक? दोनों. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब हम कहते हैं ना गोबर, we mean karyotheca. We mean what? The nuclear membrane is also known as karyotheca. Yes or no? यस सर. So that is double layered in itself, and it arises due to the mutual participation of what? ER. ER elements and fragmented vesicles of the old nuclear membrane. हमें टीलोफेज आगे पढ़ना है ना गोबर, यस सर. तो डोंट वरी. थैंक यू. ओके. कुछ और? नो सर. फॉर यूर कन्वीनियंस, सुन रहे हैं सब लोग? Yes, sir. यस सर. For your Yes, sir. convenience, I have put this meeting on record. And do you know what? In this meeting, in the beginning, there were 47 items. At this time, there are 40 only. आप समझ गए क्या? यस सर. Your competition is only you. यस सर. यस. Competition कम हो गया. तो तो चलिए. जी. माइक्रोसोम्स किस में प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोसोम्स किस में प्रेजेंट होते हैं? किस में मतलब? मतलब कौन सी सेल्स में? माइक्रोसोम्स